आमे बे स्टार्ट करिबा आज जो स्पेशल क्लास टी उसी दृष्टिकोण एंड आपण माने थीम जो पिक्चर टी अछि ताको देखि मध्य इमेजिन करि परिबे किबा आकलन करि परिबे कि कोटा हेतै पारे आज थीम एंड जो माने भी थीम विषय जानि छथि मते कमेंट सेक्शन मेंशन करंते कि कोटा हेतै पारे आज थीम राइट तो चलंतु स्टार्ट करिबा दृष्टिकोण ओडिशा करंट अफेयर फॉर मार्च 2023 फर्स्ट हमें देखिबा कि यारो स्पेशल कंटेंट कोन अछि स्पेशल कंटेंट आपण माने देखि परछंती बैकग्राउंड रे किछि पिक्चर्स अछि आपण माने चाहिले सेतिरु मध्य आकलन करि परिबे कि कोन हितै पारे आजिकार थीम कंटेंट रे अछि ओडिशा एसडीजी इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2.0 देन ISRO's STIC pegs 3 advanced projects then economic corridor on Biju birth anniversary then CM flag of first flight service to Ganjam Odisha to expand coffee cultivation in 6 districts. Gayatri Bala Panda receives Kendriya Sahitya Academy Award. 200 kilometer Odisha coast to face erosion by 2050. And we source flight test of Odisha coast successfully. After that, 100 more villages will be tsunami ready for this year. The next, Gandhamardan Hill Range, Biodiversity Heritage Site. OSL Director begs ET's Influential Personalities Award. Mayurbhanj awarded for Best Performance in TB Elimination. Odisha Scientist in Man Ki Baat. Rare Green Sea Turtle. New screen visible on sir. अपना once again join करो तो I think screen visible होउची समस्त एंड YouTube रे भी एटा जाउची ओके सो रेयर ग्रीन सी टर्टल न्यू गेस्ट ऑफ गंजाम सुरुचिकुलिया रुके एंड नो योर आर्ट एंड कल्चर आज स्पेशली अछि जोडे कि आपण माने स्क्रीन में देखि परतले एंड को माने मते कहि परिबे आज रो सेक्शन में कोन हितै पारे थीम कमेंट सेक्शन वेरी गुड सो आज अछि स्पेशली नो योर आर्ट एंड कल्चर रे फिलिग्री बात तारकस ओके तो चलंतु स्टार्ट करिबा ता पूर्व जो माने YouTube रे मध्ये देखुचंती एंड जो माने आपण माने मध्ये जदी यार सॉफ्ट कॉपी कि बाजे जदी यार पीडीएफ पाया पई चाहउछती मैगजीन पूरा रेडी अछि आपण माने कोन करिवे सिंपली जिवे ray.academy हमर साइट एंटर करिवे रिसोर्सेस सेक्शन में सेठी जो मोर ऑप्शन अछि ताको क्लिक करिवे एंड आफ्टर दैट सेठी ओडिशा करंट अफेयर करिकि गोटे स्पेशल फोल्डर अछि आपण माने सेठी जाई कि यार पीडीएफ डाउनलोड करते ओके सो चलंतु स्टार्ट करिबा फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ दिस सेशन सो ओडिशा एसडीजी इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2.0 ये कहे की न्यूज रे आस व्हाई इन न्यूज सो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्चेस एसडीजी इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2.0 to make intelligent use of this framework take the state forward towards 2030 जेमति आपण माने समस्त जानि छ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमरो टारगेट होचे 2030 को ओडिसा को गोटे बेटर वे रे डेवलप करिया पई ये सेकंड स्टेप नै छंती हमरो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तार नाम अछि एसटीजी इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2.0 announcing the state government's commitment to SDG से कौन कहितले टुगेदर वी कैन टुगेदर वी विल आपण माने मार्क करिवे जो आपण स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसीबो एग्जामिनेशंस करंट अफेयर सेक्शन सेतरे किछि एगुडा कमी इनक्लूड थाइ थीम कोन कहितले टारगेट कोन अछि प्रीवियसली यार किछि एविडेंस अछि ना नै बट प्रीवियसली किछि वर्क हेछि ना ओके चलो तो देखिबा नेक्स्ट अबाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस about previous experience कोन रही so OSIF 1.0 in 2019 एटा जो हेतला 367 इंडिकेटर्स बाय जो पैरामीटर को माप करिया पई बा चेक करिया पई 367 indicators then the OSIF 2.0 has 293 unique indicators in addition 18 repeat indicators 18टा जोटा कि रिपीटेडली ताको नियाई छी of the previous framework
having a total of 311 indicators. Okay, 311 indicators. Health, poverty, elevation, gender equality, education, employment generations, and other sectors. एगुड़ी को सब included अछि. तो आपनकर statement based question रे एगुड़ी को include हे कि आसी. Focus area कोन रहिछि ओडिसा रो 5T in all. सब ग्रुप रे जोटा कि आपण जानि कि आज का डेट रे ओडिसा रे 5T सबुतरे लागू. तो ओडिसा गवर्नमेंट टार्गेट रहिछि कि 5T सब सेक्टर रे लगेबे एंड सब सेक्टर रे 5T रो तत्वावधान रे कार्यक्रम हो. Odisha has been strengthening its resilience and adaptive capacity in dealing with the natural disaster over the year and is known today for its zero casualty. आपण माने जेमति जानि छथि कि ओडिशा सरकार तरफ zero casualty means जेतले बन्या बात्या अंचल जे जेतले आपनकर हाई अलर्ट जारी हुए पुरस्कृत होई साची इंटरनेशनल लेवल ले जीरो कैजुअलिटी रिगार्डिंग. तो ता ऊपर ही बेसी ध्यान दिया जीवो एंड अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही हॉट टॉपिक. आपण मानकर एसए सेक्शन हो कि बा करंट अफेयर सेक्शन हो बा गवर्नमेंट पॉलिसीज हो डिजास्टर मैनेजमेंट रे बहुत सारा इनिशिएटिव स्टार्ट. ओके, तो आपण माने ताकू मध्ये ध्यान. देन थ्रू द मिशन ओडिशा मिलेट्स मिशन आ गोटे सेक्शन ऊपर बेसी ध्यान दिया होची. आपण माने देखिथिबे तो रिसेंटली आपनकर हॉकी वर्ल्ड कप गला सेतिर मध्ये ओडिशा मिलेट मिशन न गोटे सेपरेट केबिन बा सेपरेट सेक्टर से ओडिशा सरकार तरफ ग्रहण कराइतला कि तार प्रमोशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट. ओके, एंड कोन से भी इवेंट होची तो आपण माने देखिथिबे ओडिशा मिलेट मिशन को बेसी ध्यान दिया बिकॉज़ यूएन तरफ मध्ये एई वर्ष को ओडिशा सॉरी यूएन तरफ मिलेट को जो आपनकर बेसी ध्यान दिया अछि जो थीम रखा अछि मिलेट पई मध्ये मन की बात रे भी प्रधानमंत्री हमरो कहिसारछन्ती मिलेट विषय रे ताकू मध्ये प्रीवियस क्लासेस रे मध्ये डिस्कशन ऑलरेडी करि साछि. द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स से मध्ये हमें कवर कर साछु. तो ताकू आपण माने कोन करिवे सिंपली प्रीवियस वीडियो आपनकर YouTube रे अछि रिविजिट करि परिबे कि जो माने भी मैगजीन को डाउनलोड करनांती आपण माने जिवे सिंपली जेंति जो प्रोसेस कहले साइट को जिवे रिसोर्सेस सेक्शन रो देन मोर ऑप्शन आपण एंटर करके स्पेशल करंट अफेयर डाउनलोड करबे. राइट आफ्टर दैट government has launched several citizen centric program and schemes जेतु हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लो कथा तो हमें ओवरऑल समस्त डेवलपमेंट कथा इंक्लूसिव प्रोग्राम. ओके, देन डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज ओडिशा वन पर ये गोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म तो मैक्स टू मैक्स डिपार्टमेंट को गोटे डिजिटलाइज करबा पई ये गोटे प्रयास सो दैट आपनकर टाइम एफिशिएंसी भी परिबो एंड वर्क अकाउंटेबिलिटी मध्ये प्रॉपर with timelines ensured through Odisha Right to Public Service Act. या द्वारा it yet another citizen-centric act of the government of Odisha. Okay, so एबे जानिबा कि about sustainable development. जो मैंने ओवरऑल जानिया पे चाहूँ कि sustainable development कहले कोन. तो यूनाइटेड नेशन डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखंतु बेले बेले क्वेश्चन एमती भी आसे कि वर्ल्ड बैंक रो किछि जदी आपनकर इन्फ्लेशन रिगार्डिंग किछि तथ्य दिबो से मध्ये आसे क्वेश्चन बा आईएमएफ तरफ किछि तथ्य दिबो बा किछि डेफिनेशन दिबो रिगार्डिंग इन्फ्लेशन से मध्ये एग्जामिनेशन आपनकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आसी अछि कि एई ऑर्गेनाइजेशन तरफ कोन रहि पारे यार डेफिनेशन सेमति होबे यूनाइटेड नेशन डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. आपण माने देखिथिबे यार शॉर्ट फॉर्म मध्ये बहुत टाइम एग्जामिनेशन ने आसी सर तो ये जो लाइन टाको आपण माने भलो भाबरे नोट डाउन करनेबे बिकॉज़ ये आपनकर एग्जामिनेशन स्टेटमेंट बेस रे नियत भाबरे आसीबो जते बेले भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो क्वेश्चन आसी. So it includes harmonizing three elements: co-elements, economic growth, social inclusion, and environmental protections, right? And the United Nations document transforming our world, the 2030 agenda for sustainable development. United Nations ग्रहण करछि 2030 agenda ग्रहण करछि transforming our world. ये भी मन रखना. So this agenda contains 17 goals and 169 targets. तो 169 टारगेट ऊपर एठी काम करिवो किंतु 17 टा जो अछि से गोल सेही रिगार्डिंग ही रहिबो. सो द एजेंडा इज बिल्ट ऑन द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा तयारी अछि
से कहा ऊपर तैयारी हिची कहा ऊपर आधारित है कि तैयारी हिची से होची मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जहार के टारगेट ला which were adopted in 2000 and were to be achieved by 2015 2015 thala तार टारगेट after the sustainable development goal. So sustainable development goal provided shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future. So basically यार काम कोन एबे का टाइम पे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोन करछ से कंजर्व करछ फ्यूचर जो हमरो जो नीड को देखि बा फ्यूचर जो हमरो यूसेज को देखि केमति हमरे हमें कंजर्व कर परिबा कंप्रोमाइज विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी को हमें जति कंप्रोमाइज न करी कि एबे कार जो यूसेज करि परिबा नेक्स्ट नेक्स्ट ताकि को जाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट यदि हमें आउट के रिसेंट डाटा देखिबा सो इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंक इज 121 मन किते भलो भाबरे out of 129 UN nation. Okay. So on the sustainable development, on the 17th sustainable development goal adopted as a part of 2030 agenda. Okay. So India's recent overall sustainable development goal score is 66 out of 100. Which person samajhte? 66 out of 100. Okay. So टॉप किए करछि एठी टॉप करछि फिनलैंड डेनमार्क स्वीडन नॉर्डिक कंट्रीज टॉप बाय जो आपनकर पोलर रीजन जो कंट्रीज अछंती ओके सो फिनलैंड डेनमार्क एंड स्वीडन टॉप ओके चलो तो जेबा नेक्स्ट ये होछि आपन माने देखि परछंती ऑन योर स्क्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो 17 गोल सो एथरो आपन माने मध्ये देखि दिबे कि एग्जामिनेशन आस्तिला प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हितला OCS examination सेक्टर मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो जो क्वेश्चन आस्तिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण मानकर ड्यूटी एटा कि 17 टा जो गोल अछि ताको विजुअलाइजेशन इफेक्ट रे कन्वर्ट करिबो ना कि ताको एज इट इज घसिबा पय स्टार्ट कर ताको बुझिबे कि फर्स्ट कोन रहिछि जदि न रहउछि माने तो आपण माने विजुअलाइज तरीका रे ताको यूज कर परबे विजन आपण यूज करिवे ए टाइप रो जो स्मॉल सेक्शंस रे जो कट हेछि जो टाइल्स गुरा को आपण माने विजुअल अप्रोच रे ताको सॉल्व कर देबे. Right, so first which no poverty, second zero hunger, 3 good health and well-being, 4 equality education, 5 gender equality, 6 clear water and sanitation, 7 affordable and clean energy, 8 deficient work and economic growth, 9 industry innovation and infrastructure, 10 required inequalities, then 11 sustainable cities and communities, 12 responsible consumption and production, 13 climate actions, 14 life below water, 15 life on land, 16 peace justice strong institution, 17 partnership for the. तो expected question ये रही पारे कि जो social development work जोटा कि रही no poverty, zero hunger, last जो part अपन करला 17, 13 जो part रहला climate change, then green energy by affordable clean energy ऊपर जो क्वेश्चन अछि सेविंग एंड जेंडर इक्वालिटी ए जो सेक्टर अछि ये मेनली इंपोर्टेंट आपण माने देई पाए राइट ये गोटे ट्रिक देन हम जिबा नेक्स्ट सो नेक्स्ट होछि इसरोस STIC बैक्स 3 एडवांस प्रोजेक्ट्स ये कोथि पे न्यूज रे आस्तला द स्पेस टेक्नोलॉजी incubation center, okay, STIC of Indian Space Research Organizations, ISRO, at the National Institute of Technology, Rourkela, NITR, has recently received approval for the 3 new projects on advanced topic at future space mission and tech development, technology development, okay. वो मोटो पर ये वर्क करला फ्यूचर स्पेस मिशन पर ये वर्क करिवो and technical but technology development. So the idea behind is ISRO's setting up the STIC at NITR is to attract nurture young academicians maximum to maximum pila kemiti bhabare e field ku asantu research karantu with innovative ideas research aptitude to carry out research. Okay, so STIC at NITR Rourkela which covers Odisha, West Bengal, Jharkhand, Bihar
and union territories like Andaman and Nicobar, right? Aim to develop an academia industry ecosystem for space technology in Eastern India. खास करी मन रखिथिले ईस्टर्न इंडिया पई स्पेस टेक्नोलॉजी रो केमति भाबरे नेक्स्ट डेवलप हे परिबो एथिरे ईस्टर्न इंडिया रो ओडिशा वेस्ट बेंगल झारखंड बिहार आसुची ता सहित यूनियन टेरिटरी आसुची मन रखिथिले अंडमान निकोबार मैक्सिमम चांसेस एटा रहउची कि यूनियन टेरिटरी जो क्वेश्चन रही होची अंडमान निकोबार एग्जामिनर को तरफ रु एथिरे आपनकर क्वेश्चन हे राइट सो जिबा नेक्स्ट होची इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑन बिजू बर्थ एनिवर्सरी why in news because recently CM inaugurated the Sohela Amapan Biju Expressway and Biju Economic Corridor to people to make 107th birth anniversary for legendary leader and former Chief Minister Biju Patnaik. Okay, during tour to Bargarh, Kalahandi, Nuapada district से tour रे जितने या कुछ से कौन करते inaugurate करते objective for the development of economics, trade, tourism activity. बुझी परछन समझते then हमें जिबा important about economic corridor कहले हमें कोन बुझते तो एठी मु टिके नउची ब्रेक एंड आपण मान को गोटे जस्ट फीडबैक आपण को दरकार पडुची कि आपण माने समस्त बुझी परछन क्लियरली then हमें नेक्स्ट याको सॉल्व करबा everyone yes sir Yes, sir. okay so everyone about economic corridor कहले हमें normally कोन बुझतो so economic corridor are integrated networks of infrastructure within a geographical area designed to stimulate economic development गोटे geographical area ऊपर बा तार डेवलपमेंट केंति बले ही पारे सेटा ही होची इकोनॉमिक कॉरिडोर मेन आमोर लक्ष्य they connect different economic agents जो to be economic generate ही पारे से एजेंट से हमने टच करम बा से एजेंट को ताकर मूल लक्ष्य थाए ताकर जदी सेही पॉइंट रे डेवलपमेंट हबो ऑटोमेटिकली टोटल इकोनॉमिक कॉरिडोर एजेंट इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया गोटे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग कॉरिडोर मे बी डेवलप्ड विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज से ही पारे गोटे कंट्री भीतर ही किबा कंट्री बाहर मध्य राइट so the Asian Development Bank coined the term in 1998 ये जो स्टेटमेंट ये मु काहे की मेंशन करली बिकॉज़ एग्जामिनेशन में आपन को राशि पारे इकोनॉमिक कॉरिडोर रिगार्डिंग क्वेश्चंस तो लेट्स से आपन को रेटी वर्ल्ड बैंक किबा आईएमएफ रो जो हवाला देखी किबा आईएमएफ रो उदाहरण देखी कि आईएमएफ coined the term in 1998 सेठी आपन को स्टेटमेंट ही बोले से याकू टर्म किए देथिले एशियन डेवलपमेंट बैंक 1998 ओके then यार बेनिफिट्स कौन छै इकोनॉमिक कॉरिडोर बेनिफिट्स बेसिकली कौन है लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करिवो रीजनल इंटीग्रेशन सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हबो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओके ये तो रहला बेनिफिट किंतु प्रतिटा स्कीम्स बा प्रतिटा वे बा प्रतिटा थ्योरी जहां भी अपन कहि पारा मेरिट थिबा संगे संगे तारो डिमेरिट भी तो डिमेरिट कोन अछि डिस्ट्रक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट तेबले आपन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो से पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया रो इट इज ऑब्वियस कि आपन से पर्टिकुलर एरिया रे जहां भी सब हिस्टोरिकल प्लेसेस कल्चरल मॉन्यूमेंट्स से मध्ये से इकोनॉमिक कॉरिडोर रे आसीले तार मध्ये डिस्ट्रक्शन सब यदि आपन रिसेंटली न्यूज़ देखुथिबे आपन माने जानिथिबे एनएचआई तरफ जेते रोड क्रिएट हुए बा रोड कंस्ट्रक्ट हुए रिसेंटली ओडिसा रे गोटे मजार एंड गोटे टेंपल ब्रेक कर दिया जायछि हनुमान टेंपल एंड गोटे मजार ब्रेक कर दिया ओके बिकॉज़ जेते डेवलपमेंट हबस्तर समस्त को डेवलपमेंट देखाइतो तो सेतिरे चांसेस अछि कि बहुत सारा जिंस कॉम्प्रोमाइज सो डिस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट क्राउडिंग आउट ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट जेते बेले भी इकोनॉमिक कॉरिडोर उठ हुए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट दरकार पड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो से आपन को नेक्स्ट मैक्स जनरेट करिवा पई पड़िबो एंड टैक्सेस बा जो टैक्स रेट अछि बा सरकार को तरफ रु ए बर्डन पड़िबो कि नेक्स्ट मैक्स इन्वेस्टमेंट एठी क्रिएट करिया पई पड़िबो किबा फंड एठी एलोकेट करिया पई पड़िबो सो दैट जहां भी आपन कर
प्राइस राइज होची बा इन्फ्लेशन होची इट इज ऑब्वियस कि सेतरे मध्ये किछिटा बढ़िबार हमें देखि परिबा देन Sir, land extraction and expansion भी होगा. कोडा Sir, land extraction and expansion भी होगा sir. ज्योतिप में बहुत yes temples land breakup or expansion मध्ये construction. होबो ओके Yes. बेसिकली से गुडी को डिस्ट्रक्शन अंडर रे आसीबो लैंड मैक्स टू मैक्स एक्विजिशन सब सेतरे मध्ये लोक को तरफ प्रॉब्लम देखा देन रीसेटलमेंट एंड माइग्रेशन अपन माने जान कि माइग्रेशन इशू तो बहुत की देखा जीवो कॉज किछिटा जो अवस्थापित हे जिबे से पर्टिकुलर एरिया रु से पर्टिकुलर एरिया रु पळे जिबे रीसेटलमेंट हेबा को पड़िबो किबा माइग्रेशन मैक्स टू मैक्स लोक आसीबे जेतळे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट हो से एरिया को डेवलप करिया पई से एरिया को कंस्ट्रक्ट करिया पई बेसिकली माइग्रेशन देखा ओके सो एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज एनवायरमेंटल मध्ये अल्टीमेटली हैम्पर हबो एनवायरमेंट बा एनवायरमेंट पॉल्यूशंस गुराको तो ये रहला बेनिफिट्स एंड डिमेरिट्स ओके एबे चलंतु नेक्स्ट so some example of economic corridor in India include the East Coast Economic Corridor मन रखंतु इंडिया रे ऑलरेडी इकोनॉमिक कॉरिडोर रो एग्जांपल सेट अछि दैट टू से होछि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एग्जाम रे आपनकर आसबार चांसेस रहउछि ओके ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर which stretches about 2500 kilometers from Kolkata West Bengal in north side to Kanyakumari in Tamil Nadu in south okay तो एथिरे को स्कीम रिलेटेड अछि भारत माला परियोजना ये भी आपन को जानिबा नियत भाबरे दरकार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कांसेप्ट से न्यू है इंडिया रे बहुत पूरा अछि एंड इंडिया रे ऑलरेडी गोटे इकोनॉमिक कॉरिडोर अछि जार नाम होछि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट इज कोलकाता रु एंड एंड इज कन्याकुमारी ओके एंड ओ स्कीम अंडर ये जाउछि भारत माला परियोजना या सहित आपन मन कहबी कि आपन माने भारत माला परियोजना स्कीम्स ठीक है भलो भाबरे देखिथिबे जे जो टाइम रे भी जहां भी स्कीम सेतरे इंक्लूड होछि किबा करंट अफेयर सेक्शन रे जो स्कीम जो ऑर्गेनाइजेशंस नाम आछु आपण माने कोन करबे सिंपली निजे तरफ रु सेल्फ स्टडी करिया पई से ऑर्गेनाइजेशन पर के ध्यान देबे से स्कीम ऊपर आउट के मोर रिसोर्स करबे सो दैट कोन हिजबो कंक्रीट क्लियर हिजबो कांसेप्ट राइट हम जिबा नेक्स्ट होछि सीएम फ्लैग ऑफ फर्स्ट फ्लाइट सर्विस टू गंजाम सीएम flag of first flight service to Ganjam. Why in news? So Chief Minister flag of the first non-scheduled, okay, which is scheduled कराया non-scheduled flight service between Bhubaneswar and Rangailunda near Barampur in Ganjam district. Right? So who will operate this? Very very important. India One Air, जो company अच्छी ये operate करेगा. Okay, will operate the Bhubaneswar Rangailunda route using the 9-seater. So Bartaman pain to 9-seater chalchi small aircraft twice a week मन सप्ताह रे दी थो ये चल बट धीरे धीरे कोन हो once route clear हेले अपन अपन max to max flight to उड़ानो भरि पड़े पर्पस कोन होछि डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी टूरिज्म एंड अदर फैसिलिटी सो ए जो कनेक्टिविटी रहला रोड रेल एंड एयरवेज मैक्सिमम कम्युनिकेशन जेतळ हुए मैक्सिमम कम्युनिकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मध्ये से प्लेस रो मैक्स टू मैक्स हुए कॉज माइग्रेशन हुए टूरिज्म रे डेवलपमेंट हुए कनेक्टिविटी सब रहले तो आपन को ट्रेड रूट मध्ये भलो भाबरे इजी वे रे सब कंडक्ट हुए राइट इबा नेक्स्ट बहुत ही इंपोर्टेंट एंड आपन माने खास करी जानि रखिबा दरकार कि ओडिसा टू एक्सपांड कॉफी कल्टीवेशन इन 6 डिस्ट्रिक्ट ओडिसा कोन करिवो प्लानिंग कोन अछि कि 6टा डिस्ट्रिक्ट को से एक्सपांड करिवो कॉफी कल्टीवेशन तो प्रथमे जानिबा कि न्यूज़ रे काई कितला व्हाई इन न्यूज़ the state government has set a target to expand cultivations the bean by 10 times in the next 5 years आगामी 5 वर्ष रे 10टी जो बा 10 गुना वृद्धि करिवो एंड 6 डिस्ट्रिक्ट वी आर अंडर एन 6टा मोर डिस्ट्रिक्ट कॉफी कल्टीवेशन करिवे सो दैट प्रोडक्शन जो कैपेसिटी अछि से 10 गुना बढ़ी about जानिबा as a part of coffee mission announced in the state budget recent माने जदी स्टेट बजेट देखिथिबे सेते स्पेशली कॉफी मिशन डिक्लेयर हिज एंड द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सपांड कल्टीवेशन इन डिस्ट्रिक्ट लाइक रायगड़ा गजपति कलाहांडी कंधमाल एंड केओंझर मन किथिबे रायगड़ा गजपति कलाहांडी कंधमाल एंड केओंझर अंडर द न्यू स्कीम कॉल्ड
coffee plantation for sustainable livelihoods. এটা बहुत ही important मन रखिथिबे जो schemes रो नाम coffee plantation for sustainable livelihood. Okay, एबे जानबे आउट के डिटेल ले. So the scheme will be implemented in the mission mode. केबेरु हबो ये? So financial year till 2018, the department has planned to extend it to the year 2030 पर्यंत extend करिवार plan अछि. Target कोन रहिछि? Increase the coffee cultivation in the state to nearly 40,000 hectare and coffee productions to 20,800 metric ton by 2030. Under new scheme, we will grow robusta coffee. So ये गोटे variety coffee रो गोटे variety हमें पढ़िबा धीरे धीरे. Next slide में मध्ये अछि information आपण मन पई. Coffee in 20 to 25% area. So interesting fact कोन coffee विषय बा ओडिसा रो coffee विषय. So in the coffee map, coffee growing area. What is the meaning of non-traditional coffee growing area? Right? A question आछे आपन माइंड रे everyone. So Yes, याको हमें sir. सॉल्व करबा धीरे धीरे. So भलो रे एतरे कनेक्टेड हे कि रहंतु. ओडिसा produce 600 metric ton arabica coffee. भलो रे जानो तू गोटे हमें डिस्कस करलो robusta coffee and गोटे होची arabica coffee. What is the basic difference between robusta and arabica coffee? ताको मध्ये हमें जानि पा. So 2021 and 22 and 610 metric ton in 2020 and 21, which is less compared to Andhra Pradesh and northeast of the two other non-traditional coffee growing areas in India. So total हम पाखरे हेगला तीनटा एरिया जोटा कि होची non-traditional coffee growing area. देखो traditional way रे coffee केमती ग्रो हुए. कॉफी रो जो मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर जो रही छी किंतु मुख्यतः से डिपेंड करे शैडो. डायरेक्ट सनलाइट ऊपर कॉफी कल्टीवेशन हे पारि. तो जो माने भी शैडो जोन रे अछंती कि बा जो मानकर घंच जंगल देखा जाए शैडो एरिया तळे ही कॉफी कल्टीवेशन करा जाए ताकू कुआ जाए ट्रेडिशनल वे. किंतु हमर ओडिसा रे से सिचुएशन नै ताकू सेति पे नॉन ट्रेडिशनल वे रे. आंध्र प्रदेश भी सेम एंड नॉर्थ ईस्ट रे भी से सेम. That's why it was a non-traditional coffee growing area. जोटा कि naturally shadow मिले नहीं. किंतु यदि हमें compare करिया बाकी जो traditional sector रे बा traditional state रे को गुडी को अछि से गुडा को मध्ये हमें धीरे धीरे जानिबा. So चलन को डिस्कस करिबा. So the three non-traditional area makes up 21%, 21% of the total area in the country under coffee cultivation. The total area coffee cultivation or 21% मैंने capture. So Odisha grows only Arabica. One of the Odisha kon kurchi purporu Arabica coffee, whereas Andhra and Northeast have some areas under Robusta cultivation. Setre no doubt Arabica bhi hochi and Robusta bhi hochi. So coffee variations bisare apna janle coffee di type ro gote hochi Arabica and gote hochi Robusta. Then ame jiba next. So Koraput and coffee, because apna mane jani chanti and very famous madhyo कोरापुट कॉफी जो माने भी भुवनेश्वर बिलोंग करथिबे बा जो माने भुवनेश्वर देखिथिबे बा कोरापुट भी जानिथिबे मैक्सिमम जो हमरो ओडिसा रो कॉफी अणा जाय बा कॉफी जो फेमस अछि कोरापुट कॉफी बहुत ही फेमस अछि. So कोरापुट डिस्ट्रिक्ट one of the major coffee producing areas grows Arabica coffee. मन ये डिस्ट्रिक्ट जे कि Arabica coffee grow जोटा कि आपण डेली बेसिस रे कोरापुट कॉफी पिउचंती एंड से कोरापुट कॉफी रे आपण मन को जानि रखिबा दरकार कि से होची अरेबिका वेराइटी. सो 2894 हेक्टर इन कोरापुट, देन नंदापुर, सिमिलीगुड़ा, कोटांगी, दसमंतपुर, लामटापुट, ओके, लक्ष्मीपुर ब्लॉक. While 1700 hectares of the land under the coffee cultivation is owned by the government. तो 1700 हेक्टर रो जो लैंड अछि से under government under and provide to tribals with the average land holding size per farmer is 1.5 to 2 acres. So government kon करछि ताकू average land holding capacity पई tribe को allow करछि and the rest belong to the private coffee growers. तो जते बेले भी आपनकर coffee development बा
कौन सब डेवलपमेंट चलची एग्रीकल्चर सेक्टर रे आपण माने कॉफी रो एग्जांपल दे परबे एंड कॉफी रो ई सब एविडेंसेस मते आपण माने मेंस आंसर राइटिंग रे लिखि परबे एंड इवन ये आपण को मेंस पाई खास करी तयारी हेची बट ता परे भी आपण को प्रीलिम्स ये बहुत परिमाण रे आपण को हेल्प करबो टू नो अबाउट योर एग्रीकल्चर टू नो अबाउट योर कल्टीवेशन इन ओडिशा राइट सो द कॉफी ग्रोन इन द डिस्ट्रिक्ट इन इज ऑर्गेनिक इन नेचर आ गोटे जिंस आसले ये ऑर्गेनिक इन नेचर ऑर्गेनिकली वे रे ताको ग्रो करा जाय एथिरे मैक्सिमम रो मैक्सिमम हमर फर्टिलाइजर सेगुडा को किछि भी यूज करा जाय तो ऑर्गेनिक वे रे ताको ग्रो करा जाय ओके जो डिस्ट्रिक्ट करा जाय कोरापुट देन नेक्स्ट कॉफी बोर्ड इन इंडिया आपण मन को मन डाउट भी आसतो कॉफी बोर्ड इंडिया कोठी अछि तार काम कोन तार कंपोजिशन कोन बा से केम तयारी हेतला केबे तयारी सो मन रखंतु द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द कॉफी बोर्ड थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल कॉफी एक्ट 7 of 1942 means of Wallis Act number 7 Coffee Act मन रखिथिबे and it is under the administrative control of Ministry of Commerce and Industry मन रखिथिबे Ministry of Agriculture अंडर रे जाउनी ये का अंडर रे जाउची Ministry of Commerce and Industry जेते बेले भी आपन कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ओपीएससी रे आसु किबा यूपीएससी रे आसु मन को एई सब जिंस को मन रखला नियत दरकार कि को मिनिस्ट्री अंडर रे आसु एंड को एक्ट द्वारा याको क्रिएट कराइछि बा सेट कराइछि so the board comprises 32 members including the chairman who is the chief executive and appointed by the government of India ये भारत सरकार को द्वारा अपॉइंट हितांतु ओके चीफ एग्जीक्यूटिव हितांतु रोल ऑफ कॉफी बोर्ड यार रोल कॉन्टेस्ट so coffee board serve as the friend philosopher guide to the coffee sector ये बेसिकली गोटे भलो सिनर्जी ग्रोथ करिवारे ये हेल्प करे गोटे फ्रेंड लाइक वर्क करे फिलोसोफर लाइक एंड गोटे गाइड लाइक वर्क करे केमिति भाबरे हमें कल्टीवेशन को मोर करबा सो दैट प्रोडक्शंस हमर बढ़िबो एंड बेस्ट क्वालिटी रो हमें जो प्रोडक्ट पाई परिबो covering the entire value chain and the core activities are like primarily directed towards the research and development transfer of technology enhancement of productions quality improvement export promotions and supporting development of domestic market okay then तारो head office कोठी अछि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया रो से अछि बेंगलोर मन रखिते बेंगलोर पे एंड हमें जो पालन करो इंटरनेशनल कॉफी डे से अछि 1st of October बुझी पाले समझते नेक्स्ट हमें जानिबा टिके इंटरेस्टिंग फैक्ट सेक्शन रे आज अछि हिस्ट्री ऑफ कॉफी कल्टीवेशन कि हमें जो कॉफी भी पढुछु कॉफी विषय रे पढुछु आपण माने जानु छथि ता विषय रे हमें हिस्टोरिकल केते स्ट्रांग होछु हमें ताको आज जानिबा ओके so history of coffee cultivation it is indigenous to Ethiopia Abyssinia plateau okay from where it was taken to Arabia in 11th century 11th century याको इथियोपिया रु आना जाइतला अरबिया so its seeds were brought by India by Baba Badan Giri ताको द्वारा इंडिया को आना जाइतला 17th century where rise to the Baba Budan Hills of Karnataka Baba Budan Hills रे याको कल्टीवेट कराइतला बा सीड को याको लगाय climatic condition कोन दरकार या पई hot and humid climate with temperature varying between 15 degree Celsius to 20 degree Celsius हमने देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन ए टाइप रो क्रिएट हुए जितले यूपीएससी अपन देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रे ए टाइप रो क्वेश्चन किसी आस एंड सेम थिंग अपन माने एक्सपेक्ट करि परबे एथरो ओपीएससी so heavy rainfall from केते दरकार 150 to 250 centimeter and it does not tolerate frost snowfall high temperature above 30 degree and strong sunshine मन रखंतु directly sunlight तळे ये ग्रो करि परिबनी मरि जीवो is generally grown under the shady trees जोटी भी shady trees अंदर रे normally natural condition है shady trees अंदर से भी प्रोड्यूस होउची से होची आपनकर को टाइप रो स्टेट एबे हमें पढी थी ओडिशा आंध्र प्रदेश नॉर्थ ईस्ट नॉन ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल तो एगुडा को होची ट्रेडिशनल स्टेट ओके माधुरी एगुडा को होची ट्रेडिशनल स्टेट जोतरे सेड जो सेडी ट्रीज अंडर रे याको कल्टीवेट करा जाय
बाकी जो पोर्शन है सैनिटरीज नॉर्मली मिलेनी ताको क्रिएट करिया पे पड़े ताको आ जाए नॉन ट्रेडिशनल so dry weather is necessary at time of ripening of the berries so stagnant water is harmful जदियो या पाई हमर अधिक रु अधिक पानी दरकार लाइक वर्षा दरकार 150 to 50 cm पर्यंत हमर सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा दरकार किंतु जदि स्टैग्नेंट वाटर रही जिवो किबा आपण राइस कल्टीवेशन जे देखछथि स्टैग्नेंट वाटर बहुत ही दरकार राइस कल्टीवेशन पई किंतु एथिरे स्टैग्नेंट वाटर इज हार्मफुल गछ मरि पछ ओके देन हमें देखिबा कि out के interesting fact about robusta and arabica so in india coffee is traditionally grown in the western ghat मनकंतु coffee कोठी traditional way रे produce करा जाय western ghats spread over karnataka kerala and tamil nadu coffee cultivation is also being expanding rapidly in the non traditional areas like andhra pradesh odisha as well as the northeast state types of coffee in india mainly two types. One is Arabica, another is Robusta, grown in India. So Arabica is mild coffee. There fragrance ke mild. Okay, caffeine content is common. So, but the bean being more aromatic. Yaro basna, yaro sugandha besi. Okay, aroma juta yaro besi. So it has higher market value. जेहेतु यारो aromatic बेसी तो तारो market value मते बेसी. So बाकी जो रोबस्टा अछि ये सबुतरे ब्लेंड है जो आपण कोको पाउडर हो बा जो भी कॉफी प्रोडक्ट जोतरे यूज होची मैक्सिमम कम खर्च रे कम लागत से सेटिंग यूज है जाय ये रोबस्टा जारो कैफीन कंटेंट बेसी अछि ऑन द अदर हैंड रोबस्टा हैज मोर स्ट्रेंथ यारो स्ट्रेंथ बा जो हार्डनेस अछि ओके ये बेसी so is therefore used in making various blends the harvest of arabica takes place between november to january किंतु जदि हम रोबस्टा कथा कहबा ये होची डिसेंबर टू फेब्रुआरी जमे अरेबिका कथा जिबा अरेबिका असला इथियोपिया रु एंड रोबस्टा असला कोठु कोंगो रु मन कोंगो रु असला एथिरे कैफीन कंटेंट अछि 1.7% टू नै की 3.5% पर्यंत एथिरे कैफीन अछि 0.8 टू नै की 1.5% बेसिकली ये बहुत ही एरोमेटिक सेति पई यारो मार्केट वैल्यू अधिक राइट एंड या सहित आपण माने देखि पजति केते हायर अल्टीट्यूड रे हुए and ये कितने हायर अल्टीट्यूड पे ओके इबा नेक्स्ट होची गायत्री बाला पंडा रिसीव्स केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड ये काहे की न्यूज रेतला बिकॉज़ पोएट गायत्री बाला पंडा received the central साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2022 कोटी न्यू दिल्ली वो बुक पई से पाई छथि दया नदी ये गोटे पोएट्री पे दया नदी ओके जोतिर के आपण माने obviously नाम रु जानि पातबे कि दया नदी का ऊपर हेतु कलिंग वॉर ऊपर ही हेतला and more about it like it has been translated into hindi as well she received a cash prize kete paitile 1 lakh with copper plate and sword which were given away at the event by academic president madhav kaushik academic president को द्वारा ये पुरस्कार है and she is also the recipient of first केंद्रीय साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार मन रखितबे ये फर्स्ट जे की युवा पुरस्कार पाइतले ओके इन ओडिया फॉर हर पोएट्री कलेक्शन गण इन 2011 2011 रे गण पई ये प्रथम युवा पुरस्कार पाइतले साहित्य एकेडमी ये ओके जिबा नेक्स्ट होची आपन को स्क्रीन में देखि पारछंती 200 किलोमीटर ओडिसा कोस्ट टू टेस्ट इरोजन बाय 2050 तो ये रिलेटेड अछि सम काइंड ऑफ आपनकर ज्योग्राफी पोर्शन से केमथि बाबरे चलो तो हम डिस्कस करिबा व्हाई इन न्यूज ए ग्लोबल स्टडी हैज प्रेडिक्टेड दैट मोर देन 200 किलोमीटर ऑफ ओडिशा शोरलाइन विल फेस इरोजन बाय 2050 कारण कोन significant decline in the flow of sediments and water volume in the major river of the state आपण माने जानि छथि जेतेले गोटे वाटर ड्रेनेज सिस्टम आपण माने पढिथिबे नदी मुहान रे नेक्स्ट डिपोजिशंस पे सेडिमेंट डिपोजिशन सिल डिपोजिशन एथि कारण कोन रहउची जेतेले नदी रो पानी ही कमी जाउची आस्ते आस्ते धीरे धीरे नदी रो फ्लो कमी जाउची नदी रो पानी सुखी जाउची तो धीरे धीरे इट इज ऑब्वियस कि तार सेडिमेंट जो कोइ कि मुहान को आने सेतिरे आ जमा ही पारु नै ता समुद्र कूल इलाका रे आ जमा ही पारु जदि सेतिरे ताकू किछि रिसोर्सेस मिलुनी जमा करिया पई तो अल्टीमेटली जो समुद्र जो ढेउ द्वारा ये जो इरोजन होउची से तो इरोजन प्रक्रिया तो बारंबार चलतो किंतु जदि सेतिरे डिपोजिशन न होबो
तो सेथिरु ऑटोमेटिकली से लैंड गुडा धीरे धीरे इरोडेड ही। So the researchers claim 45% of the 480-kilometer shoreline will face erosion, while 55% may witness assertions in the next 3 decades. In the 55% से मध्य eroded ହେଇଯିବ बा से eroded हेबारे लागि ଯିବା संपूर्ण नष्ट ହେଇଯିବ। देखिबा more about it रे। So the study titled quantitative assessment of the present and future potential threat of coastal erosion along the coast, Odisha coast, using geospatial tools and statistical techniques, identified the hotspot of erosion. The hotspot of erosion ताको identify करछे Odisha coast। जे हमें देखिबा Odisha coast basically 6 coastal district अछि Odisha, and Ganjam, Puri, Kendrapada, Balesur, Jagatsinghpur, and Bhatta. So the study area have been main rivers including Koko river mainly silt deposition karanti. So Mahanadi, Brahmani, Vaitrani, Subarnarekha, Budhabalanga, Rusikulia, Bahuda, which deposit a hefty volume of sediment into the Bay of Bengal. यदि तांको तरफु सेडिमेंट डिपॉजिट हे पारु नाही, अल्टीमेटली कोन करछि समुद्र निजर एरिया विस्तार करछि, समुद्र से जो कूल गुडी को खाइ जाउछि बा इरोडेड हे जाउछि समुद्र पानी। ठीक। Then despite being a progression coast माने आपण माने जेंति भाबरे डिस्कशन करली कि लाइक मैक्सिमम रिवर से डिपॉजिट करन। ओके, जेति कि इरोडेड होछि ताठु बेसी डिपोजिशन करथि सो दैट से जो इलाका अछि से स्टेबल रहे। सो ओडिशा कोस्ट को मना जाउतला कि प्रोग्रेडेशन कोस्ट। कोस्टल ओडिशा इज स्लोली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द हॉटस्पॉट ऑफ इरोजन। जोटा कि पूर्वरु धारणा थिला कि होछि प्रोग्रेडेशन कोस्ट, जोतरे मैक्सिमम सिल्ट डिपोजिशन आपन को देखिया पय मिलितो सो दैट समुद्र जो इरोजन क्रिएट हो सेटाओ हे परिबनी, किंतु एबे धीरे धीरे से गोटे हॉटस्पॉट होछि इरोजन। While maximum erosion was detected between Pentho and Satabhaya coast in Kendrapada, apart from the Boxipalli and Podampeta in Ganjam during 1990 and to 20. 2020 भितरे 1990 रु 2020 भितरे Boxipalli and Podampeta in जो गंजाम रे से देखाउ कंटिन्यूअसली धीरे धीरे इरोडेड ही चलछि। से जदि कंटिन्यूअस रहबो तो 55% जोटा भी रही छै हमर 3 दशंधि परे ऑटोमेटिकली से इरोडेड हे जिवो। So the 7 universities included 2 is from the Brazil and Odisha and 1 is from Malaysia and Bangladesh। यहाँ पर रिसर्च करते को यूनिवर्सिटीज एतरे रिसर्च करले 2 is from Brazil, Odisha and 1 is from Malaysia and Bangladesh। आपण माने ताकू मन रखिते, राइट? ओके, जिबा नेक्स्ट। So resource Sir, 6 university हला तो 6 university 7 university ना 2 from here and जो गोटा organizations। okay, 2 is from Brazil, Odisha and जो organizations आपको जो पैरामीटर सब रखितला including that so Malaysia and Bangladesh दीटा, Odisha 2 4 केते हला 6टा and plus say organizations। okay sir। Then move kariba resource flight test of Odisha coast successful। Why in news? India on Tuesday conducted twin successful trials of indigenously developed resource full form dekhi rakhantu very short range air defense system। Okay, very short range air defense system from a defense test facility of Odisha to Chandipur yaku chadai ek apna missile। So more about it, designed and developed by DRDO, the main portable air defense system was flight tested in quick succession from launching complex 3 of the integrated test range ITR। Okay. Next, resource is meant for the neutralizing low altitude aerial threats at the short range,
जो लो altitude रे थिबे lower altitude रे neutralize करिवो से short range ये अस्त्र. So it has been designed and developed indigenously by Hyderabad based research center Imarat Center Imarat RCI, okay, and in collaboration with the DRDO laboratories and Indian industry partners. Having a strike range of up to 6 kilometers and the missile weighs around 15 kg and is capable of effectively engaging aerial targets with low infrared signature. Right? It comes with the lightweight main portable launcher. ये कोतरे से include है कि lightweight main portable launcher and boast a highly proven success rate. Success rate बहुत ही prove करा कि बहुत ही high rate. Then the missile was first test fired in September last year. Yeah, first test fired करा इतना September month रे last. Then next 100 more villages will tsunami ready in this year. 100 more villages will be tsunami ready for this. Tarmane kon? Why in news? After international recognition, the state government has scaled up its exercise to make 100 more villages and wards tsunami सुरक्षा पाया पई बा सुनामी सहित हमें युद्ध करिया पई हमरो फुल फ्लेश ताकू लड़ीबा से जो सिचुएशन से जो डिजास्टर ताकू रेडी करा होची का तरफ ओडिशा गवर्नमेंट को तरफ according to Odisha State Disaster Management Authority OSDMA said 62 tsunami prone villages and wards have already been covered under the Indian Ocean Tsunami Ready program. Already हम पाकरे 62 tsunami prone villages सेगुडी को अछि कहांडर अछि Indian Ocean Tsunami Ready program, okay, IOTR. Then what are the activities under it? जति या अंडर आसीबो तले को एक्टिविटी एठी करा जिवो से अवेयरनेस जनरेशंस नेक्स्ट टू नेक्स्ट करा जिवो मॉक ड्रिल करा जिवो मैपिंग ऑफ सुनामी हैजर्ड जोन प्रिपरेशन ऑफ सुनामी मैनेजमेंट प्लान्स capacity building and training of different stakeholders among others. More about this, the Venkatripur Boxipalli village, Venkatripur village of Rongelunda block in Ganjam and Nolia Sahi village of Ersama in Jagat Singh have been recognized as the first two tsunami ready communities under the IQTR program of UNESCO जोटा कि इतना 2020 कले बॉक्सीपाली विलेज एंड आउट होची नोलिया साई विलेज एरसुमा ब्लॉक. देन हम टिके डिटेल ले जानिबा कि इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द इंडियन ओशन रीजन achieve the honor from UNESCO IOC and Odisha is the first state in India. So key point हमें देखि परिबा tsunami ready माने it is a community performance based program initiated by governmental oceanography commissions IOC intergovernmental oceanography commissions of UNESCO kahar wing ye UNESCO, right. The main objective of this program is to improve coastal communities preparedness for tsunami emergencies, to minimize the loss of life and property and ensure a structural systematic approach in building community preparedness through best practices. Next week's involvement रही को गवर्नमेंट तरफ next week's awareness create करा जितो so that tsunami ready करा जाई परिबो लोकन को आउ प्रॉब्लम हो बस हमने केतला tsunami regarding जहां भी information अछि future information से हमने पाई परिबे ओके सब बळे रेडी थिबे. And intergovernmental coordination group for the Indian Ocean Tsunami warning and mitigation system ये होची UNESCO रो ये गोटे wing ओके बा गोटे पार्ट. देन हमें जानिबा implementation केबे हितला इंडिया implementation in India. So tsunami ready in India is implemented by national board Ministry of Earth Science home ministry under Ministry of Earth Science under the chairmanship of director
of Indian National Center for Ocean Information Center, okay, INCOIS, with members drawn from MOES, Ministry of Earth Science, National Disaster Management Authority by NDMA, Ministry of Home Affairs, Odisha State Disaster Management Authority, OSDMA, Andaman and Nicobar Island Directorate of Disaster Management, DDM, and INCOIS. So INCOIS, an autonomous body under the Ministry of Earth and Science. So Ministry of Earth and Science is also providing tsunami advisories. Indian Ocean regions, like 25 countries. Indian Ocean regions, kitna countries achi? 25 countries achi. As a tsunami service provided as the responsibility assigned by UNESCO. Okay. Then jiba most awaited and most popular news. हालांकि आपण माने सुनिथिबे न्यूज रे मध्ये आस्तला ये कंधमार्दन हिल रेंज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट. Why in news? मैंने प्राय गुणाधिक समझते जानते हैं. The picturesque Gandhamadhan hill range of Odisha has been accorded the status of biodiversity heritage site. ये biodiversity heritage site पे स्थान पाएगा. And को number स्थान पाएगा third. Means या पूर्वरु आउ दिटा already थिले. Means even में ए वर्ष ये पाइला include हला. तो या पूर्वरु ओडिसा रा हमर थिले महेंद्रगिरी hills in Gajapati and Mandasaru in Kandhamal district. Mandasaru gorge, Gonda jo rohe Kandhamal district ro ete already included. So janiba adhiko, the forest and environment and climate change department stated that total 18,963.898 hectare, okay, of Gandhamadhan hill system spread over 12,431 hectares in the Pargad, 6,532 hectares in Balangir, has been declared a biodiversity heritage site as per the provision of Odisha Biodiversity Rule 2012. Odisha Biodiversity Rule 2012 सुधा बाद पक्षरु Odisha Biodiversity Heritage Site ये provision पाइसत्ता, and Gandhamadhan Reserve Forest is considered the Ayurvedic paradise. Okay, and जानते हैं यार mythological भूमिका मध्य बहुत सारा अच्छी पौराणिक कथारे मध्य यार बहुत सारा चर्चा से गंधमार्दन hills, Ayurvedic paradise of the state. The board found 1,700 species of plant and animals, 1,200 species of plants and 500 species of animals, and in the hill ecosystem besides around 209 trees, 135 shrubs, okay, 473 herbs, 77 climbers, 300 species of medical plants were also recorded in the hill ecosystem, of which 18 species are tagged as the threatened and 1 species as endemic. 18 जो species अच्छी से threatened category, and 1 is से अच्छी endemic category. यानी बाउटी के अधिको two historical monument एठी देखा जाए. गोटे होची नरसिंहनाथ, ये होची नरसिंहनाथ का temple on the northern slope of the hill, and Harishankar temple on the southern slope of the hill. So Odisha government had notified Mahendragiri as the biodiversity heritage site in November 2022, while Mandasaru goes in Kandhamal district was the first landscape to be notified as biodiversity heritage site in the state in 2019. So 2022 रे 2019 रे first इतला Mandasaru, then Mahendragiri इतला, then after that क्या हला Mahendragiri. Okay. Then Jiva next. OSL director beg ET's influential personalities award. Now many times. So why news? Odisha Stevedores. Okay, Odisha Stevedores Limited, OSL Groups director Charchit Mishra has been conferred ET's influential personalities award East 2023 for dynamic leadership in shipments and logistics. Basically, जो
shipments and logistics क्षेत्र रे ये बहुत ही आगुआ श्रेणी रो company. More about it, Odisha Stevedore Limited is one of the leading firm of the East India and flagship company of OSL Group, excelling in the fields of stevedoring and cargo handling. Okay, stevedoring and cargo handling, port operations, shipping, mining, logistics in 15 plus locations worldwide. Sir, ET ର full form କଣ? Economic times. Okay, clear? ଏବେ ଯିବା next. Mayurbhanj awarded for best performance in TB elimination. Recently ଆସିବା ଆପଣ କୋଉ district ଟି ଭଲ performance କରିଛି TB eliminations? Why news? The Department of Health and Family Welfare, Odisha facilitated the Chief District Medical Officer, the CDMO of Mayurbhanj, Dr. Rupavan Misra, for his performance in National Tuberculosis Eliminations Program on the occasion of tuberculosis day. जोटा कि TB हमें point करो और जानिबा TB विषय रे about TB and TB day. So World TB Day हमारा केबे पालन करा जाय 24 मार्च 24th. So TB is caused by bacterium. को bacterium द्वारा Mycobacterium tuberculosis. Okay, belong to Microbacteriaceae family. Okay, and consisting of about 200 members. Some mycobacteria causes like diseases like TB and leprosy in humans and other infect a wide range of animals. In human, TB most commonly affects the lungs, okay, pulmonary TB, but it can also affect other organs, extrapulmonary TB. So TB is a very ancient disease and has been documented to have existed in Egypt as the early 3000 BC. मन रखिए TB रो history ये Egypt रो आस्था 3000 BC रो ये देखा जायछि. So TB is treatable and curable disease. BCG was developed by two Frenchmen, Albert Clement and Camille Brain. Okay. By modified a strain of Mycobacterium bovis that causes the TB in cattle. It was first used in humans, केबे use इतला 1921 ले. In India, BCG was first introduced in the limited scale in 1948 and became a part of National TB Control Program in 1960. So ये होची symptom of TB अपन मैंने देखी पारिबे कौन कौन सब देखा जाए night sweat, poor appetite, fever, dry cough, weakness, weight loss, okay, and gastrointestinal symptom. Then global effort कौन रही? The WHO or World Health Organization has launched a joint initiative, Find, Treat All and TB. The theme is Find, Treat All. Hashtag TB and TB. Okay. So, जो रही with the Global Fund and Stop TB Partnership, WHO also released the Global Tuberculosis Report. It is बहुत important अपन. Global Tuberculosis Report के release करे ये होची WHO. So India's effort on National Strategic Plan for Tuberculosis Eliminations 2017 to 2025 पर्यंत ये रही target. The NICSI system, the National TB Information System, NICSI portion योजना, financial support जो रही TB हारेगा देश जीतेगा campaign. India तरफ को इटा campaign रही है. Currently 2 vaccines, okay, BPM vaccine project management 1002 and MIP by Microbacterium indicus training have been developed and identified for TB and under phase 3 clinical trial. So basically main thing होची एठी आपन को जानिबा दरकार कि ये रिलीज करे इंडिया को सब कैंपेन या जो बाहर करछि टीबी को लड़ाई करिया पे बा टीबी सहित केमति भाबरे भलो भाबरे फाइट करिया पे एलिमिनेशन करे पे तार टारगेट केते रहिछि 2017 ରୁ 2025 पर्यंत एंड थीम कोन रहिछि WHO तरफ रो फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी. ओके. The next National TB Elimination Program.
So 1962 रे national TB program ये first इतना was launched by government of India with BCG vaccines. Then 93 रे कौन हला WHO declared TB as a global emergency and devised the directly observed treatment DOTS तार full form directly observed treatment जोटा TB पे use करा हुआ है DOTS. पुणी 1903 रे Government of India revitalized NTP as Revised National TB Control Program (RNTC). Okay. In 1997, DOT was launched as the RNTCP strategy. By 2006, the entire country was covered under the RNTCP. In its second phase, which started in 2006, RNTCP improve the quality and reach of services despite the measures. Okay, then diagnosis करायला then बहुत सारे cases को diagnosis करला परे यहाँ परे more research करागला a large number of MDR-TB cases were reported every year. प्रति वर्ष ये cases दिखावाला. Addresses this National Strategic Plan for Tuberculosis Control 2012 to 2017 was documented with the goal of universal access to quality TB diagnosis and treatment. Significantly, कौन देखा गया कि interventions were taken during वो time period में आगला कि NSP 2012 to 2017 in terms of mandatory notifications of all TB cases. तो mandatory करा गया कि जहाँ भी notification आसिबो TB case related ताकि mandatory समस्त को जनेवा दरकार. तो ये असला National Health Mission under है. Eliminate TB in India by 2025. India रे टारगेट अछि 2025 सुधा TB को पूरा पूरी eliminate. Okay. On 1/1/2020, RNTCP was renamed as RNTCP को पूरी तरह rename करा गला. तार नाम हला National TB Elimination Program बा NTEP जोटा कि हमें एबे National TB Elimination Program. चलो तो एबे आगुटे डिस्कस करिबा ओडिशा साइंटिस्ट इन मन की बात. So why in news? So Prime Minister Narendra Modi has praised on the Odia chemical scientist Jyotirmoy Mahant for being the first from the country to receive the special award from the International Union of Pure and Applied Chemistry, okay, IUPAC by IUPAC for 2023 हमको मिली. Was 99th episode of मन की बात. हमको जानवा दरकार कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस अछि जे कि अवार्ड देले तारो इंपोर्टेंस. सो अबाउट IUPAC फॉर्मेशन के बेतला 1919 रे टाइप कोन अछि INGO स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर कोड रे अछि यारो कैलिफोर्निया रे कैरोलिना रे यूनाइटेड स्टेट रे नॉर्थ कैरोलिना रे यूनाइटेड स्टेट. ओके, रिसर्च ट्रायंगल पार्क. यार basic काम अपन the International Union of Pure and Applied Chemistry is world authority on chemical nomenclature and terminology include the naming of new elements in periodic tables. Periodic tables से जो सारा new elements सब आशी research होची ताको include करिबा on standardized method for measurement and on atomic weight and many other critically evaluated data. वो सारा critically evaluated data को नहीं की हमें सिंपली पीरियोडिक टेबल के टेबल स्थान दबा से ऊपर ही ये वर्क. चलो तो आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट ऊपर देखिबा. रेयर ग्रीन सी टर्टल्स अ न्यू गेस्ट ऑफ गंजाम रुसिकोलिया रुकेरी. सो रुकेरी माने आपण माने कोई पैसा भी जतले हेवी नेस्टिंग करती मास नेस्टिंग जो ऑलिब्रिडले माने करंती क्वाजे रुकेरी रुसिकोलिया रुकेरी जो देखि से पर्टिकुलर एरिया रे एका संग रे साइमल्टेनियस समस्त हेवी नेस्टिंग करंती. सो why in news? Ganjam Rusicolia Ruke set a new milestone. जोटा कि आपण जानि कि एई वर्ष ये गोटे माइलस्टोन बा रिकॉर्ड्स क्रिएट करछि 6.37 लाख olive ridley turtle this session आस्ते has recorded a new guest a rare green sea turtles. याको सहित गोटे न्यू स्पीसीज मध्ये अनुसंधान करा जायछि बा मिलिछि rare green sea turtle. The turtle was 1.45 meter long and 102 centimeter in width. It weighed around 140 kilogram
The adult green turtle are found in Lakshadweep, Monokitiba, out of place with the Lakshadweep, Andaman and Gujarat, but have never been seen along the Odisha coast. या पूर्वरु ओडिशा कोस्ट जमा भी देखा जाय नथला किंतु एई वर्ष जेहेतु मास नेस्टिंग हिची से भितरे मध्य ए जो ग्रीन टर्टल टी पळे आसी जानिबा आउटी अधिक द ग्रीन टर्टल विषय ओके सो ए ग्रीन सी टर्टल इज मोस्ट इजीली recognized by its top यार जो टॉप रहिछि ता द्वारा हमें इजीली चिन्हि पारिबा ओके टॉप सेल द सेल covered most of the animals body माने जो टर्टल लो मैक्सिमम बॉडी को ये कवर करछि तारो सेट है एक्सेप्ट इट्स फ्लिपर्स एंड हेड्स खाली तारो जो फ्लिपर्स पार्ट रहिछि एंड तारो हेड पार्ट छाड़ देखि मैक्सिमम एरिया को ये कवर कर दिछि एंड कॉमन नेम रहिछि ग्रीन सी टर्टल साइंटिफिक नेम रहिछि कैलोनिया माइदास ओके कैलोनिया माइदास टाइप कोन रहिछि रेप्टिल्स डाइट हर्बिवरस ये गोटे हर्बिवरस एंड डिस्पाइट हिज नेम a green turtle shell is not always green se sobale green dekha jay the smooth heart shaped shell can be blend of a different color including brown olive gray or black ye bele bele brown olive color bhi dekha jay gray color bhi dekha jay and black color bhi dekha jay so it and the underside is a yellowish white color ta jo bhitara patata se hochi yellowish white color the green sea turtle no man. The green turtle is a large, wide, smooth, जो backside of it green sea turtle have paddle-like limbs called flippers, and जो तरीके से हमने पहुंच पाए तब easy. So these dense, heavy animals can reach 3 or 4 feet in length and weight upward of 300 to 350 pounds जोटा कि रहिछि 136 to 159 किलोग्राम पर्यंत ये जाय despite their size they are still not in the world's largest sea turtles the title belongs to the leatherback sea turtles एते सारा साइज एते सब किलोग्राम थाई कि मते से वर्ल्ड रो सबटो लार्जेस्ट सी टर्टल कैटेगरी नै सबटो वर्ल्ड रो लार्जेस्ट सी टर्टल होची लेदरबैक सी टर्टल मन रखितबे लेदरबैक सी टर्टल रेंज कोन रहिछि ए सी टर्टल को मिलिबार जो ग्रीन सी टर्टल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज अराउंड द वर्ल्ड ट्रॉपिकल सीज सब ट्रॉपिकल सीज अराउंड द वर्ल्ड with two distinct population in the Atlantic and Pacific Ocean but it is also found in Indian oceans Atlantic Ocean and Pacific Ocean में मिले तासुते Indian Ocean में मध्य ये देखा जाता है स्टेटस कौन होची Indian Wildlife Protection Act हिसाब रे याको Schedule 1 कैटेगरी रखा है जी IUCN Red Turtle List हिसाब रे याको endangered घोषित करा है जी पहले समझते हैं Carapace कौन Carapace माने सेल था जो सी टर्टल से सिटी मेंशन है स्मूथ कैरापेस माने प्लेन कैरापेस तारो जो रहिछि कैरापेस बा कैरापेक जो रहिछि बा तारो सेल रहिछि ऊपरी भाग रहिछि is some kind of smooth रहिछि ओके तारो खोल पाजुटा आ गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपन मन को सम्मुख रे बे अछि जोटा कि समस्त न्यूज रे प्राय देखिते टू इंडियन प्लेसेस जोटा कि पाइछन्ति स्थान world greatest place of 2023 right विश्व रो सबटर greatest place of 2023 tourism रे इंडिया रो दीटा प्लेस स्थान पाइछन्ति गोटे होछि लद्दाख एंड आ गोटे होछि मयूरभंज why news India's Mayurbhanj and Ladakh listed in the Times magazine's list of the world's greatest place in 2020 टॉप के करछि Tampa Florida top in this list के जानिबा के अधिक so about Mayurbhanj ये कोथि में पाइछि yes so about Mayurbhanj it is mentioned as the only place on earth to sport the exceeding rare black tiger एटी आपण स्क्रीन में देखि परछन्ती rare black tiger ये only Similipal tiger रिजर्व रे देखि पय मिले so Similipal national park in Mayurbhanj is home to over 40 mammals including Asian elephant and Bengal tigers. So it is the entry of Similipal Tiger Reserve. And the magazine mentioned the Mayurbhanj Chow dance also. जोटा कि छावणी बा प्रोटेक्टिव डांस मध्ये को जाय
के युद्ध पूर्व तक करा जाउतला ए कैप्टिवेटिंग डांस फेस्टिवल ऑन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अंडर मध्य छौ डांस को निया जाय बहुत ही वर्ल्ड फेमस डांस छौ डांस एई सब कारण जोगु मयूरभंज को स्थान मिले ओके बेस्ट प्लेसेस देन मोस्ट अवेटेड पार्ट नो योर आर्ट एंड कल्चर पार्ट रे आज हमें डिस्कस करबा बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि आपण माने समस्त प्राय जानि थिबे ओडिसा वासी जो माने भी देखुचंती बहुत ही वेल नोन जो टॉपिक ती रहिछि आपण माने डे टू डे लाइफ रे यूज करचंती देखुचंती ओके से होची फिलिग्री बा तारकसी फिलिग्री बा तारकसी नो योर आर्ट एंड कल्चर सेक्शंस रे आज हमें कवर करिवा फिलिग्री बा तारकसी यार इंपोर्टेंस मु कहि रखुची आपन को मेंस रे आपन को बहुत टाइम रे आपन देखिते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रे आपन कर मेंस रे एथु क्वेश्चन आसीची हां पूर्वरु ये 5 मार्क्स 10 मार्क्स रे आस्तला किबा मैक्सिमम आपन 5 मार्क्स रे आस्तला किंतु जेहेतु आपन कर आर्ट एंड कल्चर पार्ट इंक्लूड हेची सेपरेटली तो सेतिरे चांसेस यार होची कि इंडिया रो सॉरी ओडिसा रो आर्ट एंड जो क्राफ्ट पोर्शन होची ताकू इंक्लूडेड करकी गोटे सेपरेट क्वेश्चन करकी मध्ये यार आसबार चांसेस रहची चलंतु आज स्पेशल सेगमेंट रे हमें डिस्कस करिबा फिलिग्री बा तारकसी जोटा पे कि फेमस अछि कटक हमर जो रहिछि कटक तारकसी गांव पई बहुत ही फेमस तो फिलिग्री यार हिस्ट्री यार कल्चर यार स्टार्टिंग पॉइंट हमें टिके जानि रखिबा फिलिग्री इज आल्सो कॉल्ड एज filigrane or this is a very unique craft representing a dialect jewelry metal work बहुत ही निपुण भाव रे काम करा जाए फिलिग्री बा तारकसी काम रे बहुत ही सॉफ्ट एंड निपुण भाव रे कारुकार्य सब करा जाए एंड बहुत ही देखिया पई ये बहुत सुंदर खास कर ओडिसा रे मैक्सिमम आपन को फेस्टिवल ले देखिया पई मिले आज का डेट रे यार चाहिदा बहुत ही अधिक अछि एंड इट इज यूजुअली मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर okay the pieces of the craft work also constitute tiny beads or twisted threads छोटा छोटा जो मुंडली रहिला टीनी बीड्स रहिला एंड ट्विस्टेड थ्रेड्स जो स्मॉल बा निपुण सूता जो तयारी करा जाय अपन को रूपा तारकसी रे ताकू भलो भाबरे गुंथी की बा हमें कहि परिबा मैनेज करके ताकू गुणी की तो भलो भाबरे ताकू क्राफ्ट्स गुडीको बा जो आर्ट एंड क्राफ्ट गुडीको तयारी करा जाय अपन मन देखि परथिबा ऑन स्क्रीन रे अपन देखि परछन केमति करे प्रिपेयर करछन हमर शिल्पी माने एंड और बोथ ऑफ दिस इज एन आर्टिस्टिक कॉम्बिनेशन ओके नेक्स्ट हिस्ट्री जानिबा यार हिस्ट्री बा ये केमति भाबरे आस्ते origin of filigree art so it consists of fine metal wires which are crafted beautifully to give an extraordinary blend of ancient and modern ये पुरातन काल रो वर्क नूतन काल रो वर्क गोटे भलो ब्लेंड आपन शो करे ओरिजिनेट इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट माने मन रखिबा दरकार यार जो ओरिजिन रही छी ये जो आसी छी ये मेसोपोटामिया सभ्यता इजिप्ट सभ्यता रो आसी बिलीव एज द फिलिग्री आर्ट फर्स्ट कंट्री तारकसी कामर ए माने फर्स्ट कंट्री भाबरे सुपरिचित द चार्म ऑफ फिलिग्री ज्वेलरी स्प्रेड इन एशियन continent during 2500 BC 2500 BC रे ये एशिया कॉन्टिनेंट रे बहुत सारा फेमस हला नेम एंड फेम पाइला आदृत हला so specifically created by craftsmen belonging to Mediate city in Mardin provinces of Upper Mesopotamia. A pattern of filigree design using both gold and silver wares emerged with was popularly known as telkari. Okay, telkari till today as well. Many experts craftsmen produce telkari jewelry, which is highly intricate and delicate. बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही हमें कोमल कहि परिबा. Okay, and filigree work is often traced back to the Italian and French metalwork of 17th to 19th century रे मध्ये एठी देखायला Italian and French. So it is derived from the Latin word called filum, meaning thread, and granum, which means grain or small beads. Filum meaning thread, basuta, okay, and granum, which means grain or small beads, small जो छोटा छोटा कुंती जो रही छी बा खंड जो गोला आकार जो आपण रही छी ओके बीड्स माड़ी जो हमें कहिते the next a part of the Odissi jewelry a very famous dance and Odisha रा हमर जो
आम जो राज्य तरफ जो नृत्य रही राज्य आम खास कर ओडिशार नृत्य बा परिचय मैं कहि परिबा ओडिसी डांस। ओडिसी डांस आपण माने मैक्सिमम देखिथिबे कि ओडिसी डांसर्स माने मैक्सिमम ए ज्वेलरी को यूज करंती। सिल्वर फिलिग्री आर डेकोरेटिव ओके यूज्ड एज एक्सेसरीज और होम डेकोर एज रिलीजियस एंड कल्चरल पीसेस। आपण माने वेरी फेमस देखिथिबे दुर्गा पूजा बेले कटक रो वेरी फेमस दुर्गा पूजा सची मांकर चांदी मेढ़ हुए बा सुना मेढ़ हुए जोथि भी यूज हुए ई सब फिलिग्री कारुकार्य जोथि यूज हुए। द प्रोडक्ट लाइंस इंक्लूडिंग द बेटल लीव्स कौन सब डिजाइन हुए बेटल लीव्स जो पानपत्र आकार ओके लाइक दिस एंड वॉलेट्स कैस्केट्स वेरिमियन बॉक्सेस एंड डाउरी आइटम्स राइट। तो यही सब डिजाइन सब प्रोडक्ट तैयारी है बेटल लिप्स वेसल्स बा ए जो बेटल लिप रखिया पई जो प्रोडक्ट रही ताकू रखिया पई ए जो विभिन्न कारुकार्य रे निर्मित ए सब वस्तु सब क्रिएट करा जाय सो दैट जो माने भी आगो काल बा एबे का टाइम रे मते यार चाहिदा अधिक रु अधिक वृद्धि पाउची। पान रखिबार जो वेसल ताकू सही आकार रो बना जाय बहुत सारा डिजाइन देकी वॉलेट कैस्केट देन वर्मियन बॉक्सेस एंड डाउरी आइटम्स जोटा की पूर्व यूज करा आज का टाइम रे भी मध्य जो डाउरी जो सिस्टम अछि सेटा मध्य मैक्सिमम दिया जाउला जदि ए गोटे समाज रो कुप्रथा बट ए जो आइटम्स गुडी को बा ए जो प्रोडक्ट्स गुडी को से टाइम रे फिलिग्री आर्ट रे तयारी होतला बा से सूक्ष्म कारुकार्य रे तयारी होतला जहार चाहिदा अधिक। तो मॉडल्स ऑफ जगन्नाथ टेंपल्स कौन देखिया पई मिले हमको एबे का टाइम रे जगन्नाथ टेंपल देखिया पई मिले फिलिग्री आर्ट रो कोणार्क टेंपल मुक्तेश्वर आर्क जो रही आपनकर मुक्तेश्वर गेट ओके एंड आल्सो क्रिएटेड एन एक्जिबिटेड अब्रॉड विदेश को मध्य ये रप्तानी करा जाए एग्जीबिशंस करा जाए ओके। और इसार आर्ट एंड कल्चर को हेरिटेज को प्रमोट करिया पई मैक्सिमम फिलिग्री आर्ट प्रतिनिधित्व करे एंड आपण माने जानि पूर्व जेमते हम कवर कर सचो पट्टचित्र एंड जो जनवरी मास रे हितला हमरो चांदुआ पिपिंगरो चांदुआ से माने मध्य प्रतिनिधित्व करंती ओडिसा रो आर्ट एंड हेरिटेज को विश्व दरबार। The main component that go into making silver filigree component as usually silver copper zinc and cadmium. Different grade of silver are used in main metal alloy and copper was traditionally mixed with the silver in the ratio 90:10 for the creation of the desired alloy metal. Copper is added to increase the strength and while zinc is used in the solder metal to reduce the melting point of alloy and increase its strength. Cadmium was a recent addition. Cadmium पूर्व use होना था, recently add करा इसका to the solder and was added to reduce the melting point of the alloy and to increase the durability. And tin is used. Tin को मतलब use करा is used to lower the melting point. Okay, and the three-dimensional nature of the merchandise made in Katak provides them a sensible and make them distinctive in Katak cluster. कटक रे खास करी ये बेस आधुनिक रही घर घर सुप्रसिद्ध हमारा जो तारकसी काम दुर्गा पूजा पेंडल्स बा मेढ़ और दुर्गा पूजा पेंडल्स इन कटक देन कामा चेन्स ओडिसी ज्वेलरी स्पिरिचुअल कल्चरल आइटम्स रे याकू मैक्स टू मैक्स यूज कर। तो ये ही तिला खास करी म आपण पई नै आस्त्री फिलिग्री आर्ट्स बा हमर तारकसी काम बा तारकसी कारुकार्य कोठू वेरी फेमस कटक के एंड 2000 जो एक मसिया रही सेबेरु गवर्नमेंट कोन स्टैंड रही याकू जीआई टैग रही याकू जगह सॉरी 2021 मसिया 2021 मसिया रु गवर्नमेंट ताको तरफ प्रयास करछन कि मैक्स कंट्रीब्यूशन हो एथिरे एंड याकू जीआई मान्यता मिलु एंड ये होपफुली हमरो गौरव हिसाब रे याकू निश्चित जीआई टैग मिल जिवो ओके एंड ओडिसा रो आर्ट एंड कल्चर एमति भाबरे फ्लोरिश करबो। सो एई सेक्शन में आपण माने जानले यार डिटेल अबाउट फिलिग्री आर्ट एबे आपनकर मेंस रे जदी एथिरे क्वेश्चन आसीबो आपण माने निहाती भाबरे याकू सॉल्व करि पारिबे एंड यार डिटेल्स को प्रोवाइड करिबे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो आजि पई एति की आपनकर ओडिसा करंट अफेयर जो दृष्टि कौन होची स्पेशली फिलिग्री आर्ट ऊपर बा तारकसी वर्क करे एंड खास करी जो माने भी वीडियो को देखुचंती
जो माने मैगजीन को डाउनलोड करबा पई जाउछंती सिंपली आपण माने ray.academy रे एंटर करबे साइट रे सेठी रिसोर्सेस लाइन में क्लिक करिवे सेतिरे मोर ऑप्शन गोटे आसीबो सेम लाइन रे आपण माने सेठी क्लिक करिवे ओके मोर ऑप्शन है स्पेशल कैटेगरी रे ओडिशा करंट अफेयर सेक्शन गोटे आसीबो सेतिरे आपण माने दृष्टिकोण सब मैगजीन रो पीडीएफ आपण माने पाई जाई पारे ओके दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू ऑल ऑफ यू आज सेशन हमें एठी एंड करबा ठीक अछि सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, Thank sir. you. Good night. Thank you, sir.